Welcome everyone to the new session on interruption of transmission of disease. Myself, Dr. Tushar Kalra, MD third year, Community Medicine. So let's begin our session. So we have learned earlier about the chain of transmission, that is from reservoir or source of infection to various routes of infections to susceptible host. So in earlier videos we have learned about the preventive approaches to reservoir or source of infection. Today we learned about the how to stop the transmission from reservoir to susceptible host. Now, interruption of transmission. The chain of transmission can be broken based on the type of disease. For example, in vector-borne diseases, it can be broken by source reduction. Example, malaria, dengue, by elimination of breeding places. In foodborne disease, hand hygiene and ensuring safe drinking water. In zoonotic disease, vaccinating the canine population, as in rabies. Now, disinfecting agents are of three types. That is, first is natural, that is sunlight for linen and bedding. Second is physical, hot air oven for disinfecting glassware, autoclave for linen and dressing, and OT instrument. C is chemical agents, that is for hydrogen peroxide, glutaraldehyde, iodine compounds, alcohol, and phenols. Now, disinfection. So, disinfectants are antimicrobial agents applied to surface of non-living organism. And disinfection, it is a use of physical procedures or chemical agents to destroy most microbial form. However, bacterial spores and relatively resistant organism may remain viable. So इसमें most microbial form destroy हो जाता है, bacterial spores and relatively resistant जो organism होता है वो viable रहता है. So इसके three types हैं: pre-current prophylactic disinfection, that is disinfection of water by chlorine or pasteurization of milk. Second is concurrent disinfection. Disinfection is done as soon as possible after the discharge of infectious material from the body of infected person or after soiling of articles from infectious discharge, as in dressing, aprons, gloves, etc. And third is terminal disinfection. This disinfection is done after the patient has been removed. That is, कैसे रिमूव करा? बाय अगर उसका डेथ हो गया है या फिर to another hospital, or to be seized, it has been seized as a source of infection, or after other hospital isolation practices has been discontinued. So sterilization क्या है? It is a use of physical procedures or chemical agent to destroy all the microbial forms including bacterial spores, mycobacterium and non-enveloped viruses and fungi. So disinfection में क्या हो रहा था? Most of the जो organism है वो destroy हो रहे थे, excluding the spores. इसमें सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. सो स्टेरिलाइजेशन इज सुपीरियर टू डिसइंफेक्शन. सो इसमें apparatus स्टेरिलाइजर दैट इज यूज फॉर मेडिकल डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स और सप्लाईज. एंटीसेप्टिक्स एंड सैनिटाइजर्स. एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट और अरेस्ट द ग्रोथ और एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग देयर एक्टिविटी और बाय डिस्ट्रॉइंग देम. सो दिस टर्म इज यूज फॉर प्रिपरेशन दैट इज टॉपिकली अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू. सो ये लिविंग टिश्यू पे हम एंटीसेप्टिक सप्लाई करते हैं. सैनिटाइजर क्या होते हैं? एजेंट दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स टू ए सेफ लेवल. तो सेफ लेवल तक हमें ले जाना है एज जज बाय द पब्लिक हेल्थ रिक्वायरमेंट्स. कॉमनली यूज विद सब्सटेंसेज अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. एंड थर्ड इज डिटर्जेंट्स, दैट इज सरफेस क्लीनिंग एजेंट्स दैट मेक्स नो एंटीमाइक्रोबियल क्लेम ऑन द लेबल. सो नो एंटीमाइक्रोबियल क्लेम होता है. दे हैव हाइड्रोफिलिक एंड ए लाइपोफिलिक कंपोनेंट होता है. ये कैसे एक्ट करते हैं? बाय लोअरिंग द सरफेस टेंशन. सो एग्जांपल क्या होता है कि सोप विच रिमूव्स बैक्टीरिया अलॉन्ग विथ द डर्ट. सो नेक्स्ट है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिकेसी ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन. कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक तो हो गया कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कितना है, नंबर एंड लोकेशन ऑफ द माइक्रोब्स, इनेट रेजिस्टेंस ऑफ द माइक्रोब्स, कंसिस्टेंसी एंड पोटेंसी ऑफ द माइक्रोब्स, देन बायोफिल्म, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर. देन ये है कि इस स्लाइड में लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू डिसइंफेक्टेंट्स. सो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? सो लीस्ट रेजिस्टेंस टू मोस्ट रेजिस्टेंस, ये अरेंज्ड है ऑर्गेनिजम्स. सो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं, देन वेजिटेटिव बैक्टीरिया, देन फंगाई, देन नॉन एनवेलप्ड स्मॉल वायरसेस, माइकोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल स्पोर्स. सो बैक्टीरियल स्पोर्स क्या होते हैं? मोस्ट रेजिस्टेंस होते हैं. सो एनवेलप वायरस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिपिड इन द एनवेलप. इन वेजिटेटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव इज
more resistant than gram positive. In fungi, some resistant to disinfectant is there. In non-enveloped small viruses, presence of proteinaceous viral capsid, mycobacteria due to presence of vesicle, and bacterial spores due to their coats, they are highly resistant to environmental stress. Also, these are my references. Thank you everyone.